جب آدمی نیکی کرتا ہے, every time you remember it, you feel good inside. اور گناہ کا کیا ہے, جب گناہ یاد آتا ہے اندر تکلیف ہوتی ہے. And this is same for all Muslims, non-Muslims alike. کسی کو زیادہ احساس ہوتا ہے, کسی کو کم احساس ہوتا ہے. جس کا ضمیر مرا ہوا ہے اس کو کم احساس ہوگا, جس کا ضمیر زندہ ہے اس کو زیادہ احساس ہوگا. Every time you will remember that you gave charity, you will feel good about it. Every time you will feel that when that particular man was asking me, I didn't give it to him, and then I bought that something which I needed. The things that I bought, they actually helped me, yet I didn't give it to him. Every time you will remember this, you will feel bad inside. یہ ہمیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Allah says, you have been built like this. I have built you like this. So every time you will try and curtail your nafs from your desires, you are a successful man in this world and in the world hereafter. Look at what happens when we are in the school. جب ہم اسکول میں ہوتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں, ہم پڑھائی کرتے ہیں. ایگزام کا ٹائم آتا ہے, when it's time for the exams, the one who understands that I have to study, look at his face just goes absolutely pale, because he knows it's time for me. I cannot waste this time. مجھے اپنی خواہشات کو اس وقت قربان کرنا ہے آگے دائمی خوشی لینے کے لیے. مجھے اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہے. لیکن جو نہیں کرے گا, جب وہ فیل ہوگا تو اب دائمی تکلیف اس کی زندگی کا حصہ ہے. An eternal chastisement is now going to be part of his life. Why? He did not sacrifice his desires when it was needed to sacrifice. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, as the Quran says. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. This is that particular sound that man is going to make who is going to get his book in his right hand. اللہ فرما رہے ہیں جس کو دائیں ہاتھ میں کتاب ملے گی وہ ایک نعرہ مارے گا, هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Look, I got my book in my right hand. مجھے میرے وہ خوشی کو قرآن نے, اس ہا کو قرآن نے خوبصورتی کے ساتھ الفاظ میں پرو دیا ہے. What is he going to say? Do you remember? Do you know what he's going to say after this? He's going to say, Inni zonantu anni mulaqin hisabiya. I knew I have to stand in front of Allah and give hisab for every breath that I am taking. Inni zonantu anni mulaqin hisabiya. مجھے پتا تھا میں نے حساب دینا ہے. اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. ہم تم سے راضی ہو گئے, ہم تم سے راضی ہو گئے. اور اب کہاں بھیجیں گے تمہیں؟ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ. عالی شان جنت میں بھیجیں گے. قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ, جہاں پر پھل لٹکے ہوئے ہیں مزیدار سے. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. یہ ہیں وہ بول, ایک ایک بول اتنا بھاری ہے کہ یہ اگر پہاڑ پر گرے تو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دے. ایک ایک بول ایسا ہے. یہ تو بدقسمت انسان ہے جو اس کو ٹھک سے بولتا ہے اور بول کر بھلا دیتا ہے. ہاں, اللہ فرمائیں گے ہم خوش ہوئے تم سے, چلو اس عالی شان جنت کی طرف جہاں ایسے خوبصورت پھل ہیں, کھاؤ لٹکے میں درختوں سے. کلو واشربو, just the way we say. In fact, this can so beautifully be translated in our language. ہم نہیں کہتے او یار کھا پی یشی پٹ.
पंजाबी में जी, और खाओ पियो याशी पटो, eat drink whatever you have to do, be merry, कुलो वशरबू. Why? हनी अम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया. वो जो ख्वाहिशात को कुर्बान करने का वक्त था, वो जो दिन थे, वो तुमने अपनी ख्वाहिशात ऐसी कुर्बान की कि अब हमेशा 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 के लिए खाओ पियो, ना पेट खराब होगा ना पेशाब आएगा. हाँ, लाखों साल खाते रहोगे, हर खाने का अपना, हर चबाने का एक मजा होगा. हाँ, जितने जिंदगी गुजारोगे अब बुढ़ापा नहीं आना. हाँ, अब बुढ़ापा नहीं आना, बीमारी नहीं आनी, घर तुमसे नहीं लिया जाएगा, अब तुमने मॉर्गेज नहीं देनी, अब घर के किराए नहीं देने, अब तुमने कुछ भी नहीं करना, सब कुछ तुम्हारा है. खाओ पियो. जो जिम्मेदारी के और कुर्बानी के दिन थे वो तुमने बहुत खूबसूरत गुजारे. और इसके बरक्स एक आवाज और आएगी, वअम्मन ऊतिया किताब बिशिमालिही, जिसके बाएं हाथ में किताब दी जाएगी वो भी कुछ बोलेगा. वो भी कुछ बोलेगा. वो क्या बोलेगा? फयक़ूलु या लैतनी लम ऊता किताबिया, ये मेरे हाथ में किताब कहां से आ गई. पहली बात तो हदीस में आता है उसका पूरा चेहरा काला हो जाएगा, एकदम से काला. हाँ, और फरिश्ते उसको इधर से आके पकड़ेंगे, एक यहां से पकड़ेगा, यहां से. 2 फरिश्ते हर इंसान के साथ होंगे उस वक्त, 2 फरिश्ते. और रिवायत में आता है कि एक फरिश्ते में इतनी ताकत होगी जितनी तमाम जिनो इंस में होती है. वहां जितने जिनो इंस खड़े होंगे उनमें जितनी ताकत है वो एक के अंदर होगी, और एक इंसान पर 2 होंगे. एक के हाथ में किताब होगी, एक ने इधर से पकड़ा होगा. ना सुन सकेंगे, ना देख सकेंगे, ना बोल सकेंगे. रहम का मादा उनमें नहीं होगा. और वो बोलेगा वलम अद्रि मा हिसाबिया, मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे हिसाब किताब भी देना है. मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था. वहां चलेगी ये बात उस वक्त, वहां ये बात चलेगी दोस्तों उस वक्त. विल दिस थिंग वर्क? मुझे आई डोंट नो, या नहीं चलती. ये इमिग्रेशन के ऊपर एक दफा जेब के अंदर थोड़े से पैसे ज्यादा निकल आए मेरे, उसके ऊपर उस पर लिखा होता है ना वो कस्टम्स के ऊपर मॉनिटरिंग फलाना फलाना. उसने बोला here it is written you should have declared this. I said I could not understand monetary sir, that's not my problem. वो सुन भी सकता है, देख भी सकता है, बोल भी सकता है, रीजन भी कर सकता है, और वो जानता है कि मैं एक इंसान हूं, गलती भी कर सकता हूं, लेकिन वो मेरी बात समझने को तैयार नहीं था बिल्कुल. इमिग्रेशन का अफसर तो वो तो उनको सुनाई भी नहीं देगा, बोल भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते. वो कहेगा वलम अद्रे मा हिसाबिया, सो व्हाट. या लैतहा कानतिल कादिया, I wish I had not risen up after dying. I wish I had not gotten up.